କୋଉଠି କୋଉଥିଲେ where are we audible or not अरे सुबह होची ना नहीं audible I audible Yes, sir. किए कहबो तले सर ताऊ हां why did the third Anglo-Mysore war fail to decisively weaken Tipu Sultan मुझे कौन ना से फ्रांस संगे बसला कौन बुझोतली तापर निजे भूली गेली हां यूएस कोड अरे आ जाइतला ना okay we'll see to it let's come to 87 assess the historiographical debate एगरा सब फालतू कथा रहला historiographical debate we have framed this kind of question so that you will feel trouble याठू ऊपर से किछि पचारि परिबेनी historiographical debate on Deccan riots of 1875 Deccan riots में तमरे 20 थरा आगुरु पढी आछो contested by revisionist historians माने किछि तू धर बुझी पालुनी revisionist माने कोन माने किछि नै revision माने revision आगुरु गोटे थिला थॉट प्रोसेस सी एविडेंस आनी कोछ ना 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 एटा एमिति भी हेइ थई पारे सी रिविजन करछन बुझला रिविजिट करछन जिन सर तू जदी बुझी पालुनी रिविजनिस्ट हिस्टोरियन डू नॉट गिव अ डैम अबाउट इट तो खाली देख कॉन्टेस्टेड माने से कॉन्टेस्ट करछन तब it was a direct response to Rothwari's system's inflexible revenue demand. They reflected a broader anti-money lender sentiment rather than anti-British agitation. See, anti-British तो थिला, anti-money lender भी थिला. बुझला? Easy question. They precipitated the Deccan Agriculturist Relief Act as an immediate British concession. Easy question. 1 and 3 will be the answer. Easy. Deccan Riots of 1875. I hopefully you have read it multiple times. Revolutionary nationalist movement. Okay. As a whole, कह दीजिए अनुशीलन समिति डिसेंट्रलाइज सेल्स माने सेल्स माने ग्रुप रे काम होता छोट छोट ग्रुप रे डिसेंट्रलाइज माने छाड़ छाड़ी काम करथबे बुझला निज निजर काम करथबे अलग अलग हे काम करथबे ए सेल रो लीडरशिप सेल होतबो सेल रो लीडरशिप सेल होतबो सेंट्रलाइज वे रे किंतु ताकर गोटे सिमिलर एम थियो एमिथ हेले कोन ना ब्रिटिश ताको धरि परिबनी गेटिंग ओके statement not upheld by historical census माने कोटा भूल अछि अनुसार decentralized cell evaded British intelligence until the 1920 statement ठीक अछि एटा स्टेटमेंट ता कोन ना ठीक अछि एला एटा upheld होउची एला एटा वन ता आंसर हबनी बुझला जोटी वन तो कर दे upheld होउची एटा upheld होउची कि ना स्टेटमेंट ठीक अछि अब upheld होला आंसर हबनी नॉट क्वेश्चन the movement तुम्हारा ये से रिजल्ट ऑल हम भाई क्लास में वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश करके नहीं जर्मनी इंग्लिश प्रेसिडेंट अदर मूवमेंट में नहीं फ्रॉम इट्स ओवर रिलायंस ऑन सपोर्ट ओवर रिलायंस ऑन सपोर्ट यू वर्ल्ड ऑर्डर वन सेकंड ठीक अछि माने अपडेट होउची माने आंसर तो हबो नॉट अपडेट डेटा HHS are a ideological shift to socialism. It has a settlement ठीक है. S का होची socialist. HHS are a ideological shift to
socialism statement ठीक अछि alienated अलग कर देला it's a reason based नहीं नहीं अरे socialism आसी reason based अछि पढ़ेला कथा तमे जो केनता पहला स्टेटमेंट थ्रीटा भूल अछि ऑफेंड करूनी ओनली थ्री विल बी आंसर एथरे भी तुम माने भूल कल माने एई टाइप रो क्वेश्चन हम आगु तक करूनो रिजल्ट खाली पढो माने चेक करे यूजुअली नॉट करे इनके के लैंग्वेज चेंज हेगला पड़ला जेला एना केमति करबी एटा ऑफेंड होची स्टेटमेंट पढली ऑफेंड होची कि हां हां पता नहीं नॉट हला बोले ऑफेंड होची ना हां पता नहीं नॉट हला ऑफेंड होची कि ना ना नॉट हला बहुत दिन जानकारी हमें बहुत सक्सेसफुली से काम करिछि critically evaluate the following about the प्रार्थना समाज कैप्चर रही है reform agenda okay which of the assertions contested बुझला by modern scholars नहीं और कोई भी it prioritized military marriage okay over no caste abolition reflecting elite conservatism over नहीं थी military marriage कथा से पहुंची caste abolition कथा से पहुंची competition नहीं reflecting elite conservatism सही नहीं हुआ बुझला it's a theological role in Bhakti tradition okay this distance is from the western idea no this is from western tradition it influences the entire education society more than it's easy question just there is a change in the wordings that's it रोटी बुझेगा नहीं चावला हां तो का मूवमेंट बिकॉज़ ऑफ किंग मूवमेंट किंग मतलब नॉर्थ ईस्ट दिखा का मूवमेंट ऊपर हम आगु कथा हेचु या पूर्व तार बधे या पूर्व क्लास बधे कथा हेचु नामदारी मूवमेंट सिंह मूवमेंट आई थो सिक्किज्म का राइज थो एज अ फोर्स टू सेफगार्ड द इंडियन कल्चर ट्रूली जब इंडिया को एटलीस्ट दैट पार्ट ऑफ इंडिया जब इंडियन कल्चर पहुंची गई on the onslaught of the outsider there was always six most six not always so the Sikh gurus have given their lives for our cultural safeguards so we all should have that sense of respect for that pagadi Sikh mane pagadi nice sense of respect they have given lives for us generations are safeguard us now we should not compare the Sikhs with the Indian Khalistanis. Khalistanis have nothing to do with Indian Sikhs. They are jokers, we will deal with them and that of the post-independent class. Sikhs they will, this bloody Khalistanis will destroy temples. ସେମାନେ ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗିବେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ ମୁଁ କଥାଟା ମାନୁଛି ଆମେ ଶିଖ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା why because the Sikh gurus are gurus they are not of Khalistanis right by saying this if you use to come movement Sikh manakara Sikh revivalism you understand what is revivalism I hope we have dealt in the social religious reform movement class what is revivalist and what is reformist I hope we have done it right. Revivalist revive karibe to purity. माने religious purity of अपने से माने चर्चा करेंगे. It fused okay Sikh revivalism with anti-British militancy ठीक अच्छी against Klaus yes one बार correct but not upheld. तारा upheld होची ना हाँ अंतर ना ना not upheld बना it declined its decline was hastened by internal system
over leadership succession ना होय ना ए रोगटा हमर बहुत पूर्ण इंडियन माने रोगटा irrespective of the ability of the people जन जन बड़े आई की लीडरशिप जाई की हमें स्लेव ही जो एटा हमर उदाहरण हैबिट अछि कोनटा जोटा से हम मानू से तो जे स्टेटमेंट टू अफेंड हो चिकाले आंसर हबनी it inspired other movement बहुत और movements radicalism पंजाब डायरेक्टली तो किसी करूनी अफेंड होउनी तनकरी वी विल द आंसर other movement and program movement के संग direct relationship नहीं तनकरी स्टेटमेंट इटा अफेंड होउनी तनकरी वी विल द आंसर बेस्ट program movement पर बहुत सारा आगु कथा रही छे क्लास में भी छे टेस्ट डिस्कशन लगी छे इजी क्वेश्चन था 1919 लाख কথা কমনি है कॉन्ट्रैक्ट गेम्स फॉर डिक्लेरेशन কথা जोथरे ये डिक्लेरेशन ପରେ इंडियन जल्दी सेल्फुल କଥା କହିବେ and more Indian participation in the administration କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ଏଟା सेलिब्रेशन ମିଳିବନି contested several पर हरा this is the significance of my declaration of 1917 getting what I'm saying डिक्लेरेशन ऑफ 1917 কথা কହୁছি थरे मॉन्टेज एक स्टेटमेंट ला देई छी तापर इंडियन जदी सेल्फुल কথা कहउचंती विदिन सेल्फ विदिन द ब्रिटिश राज and more participation of Indians than that of the administration কথা कहउचंती ताले ताको ऊपर सेलिब्रेशन चार्ज लागिवनी This is the significance of Montague's Declaration of 1970. Why did Montague's Declaration 1970 fail? अच्छा fail पहिला okay. एमती पढ़ी हुआ exam hall bridge moderates and extremists divide within the INC 1971 पढ़ा Home Rule League movement चलची Home Rule League movement वाला success होची success होची बोली पूर्ण करे 1907 रो सुरत में टाइप रो काम करे ना इच्छा जब पढ़ी तो चल मैं कथा बोल पड़तू होम रूल लिमिट होची सक्सेस मिला टाइम दा सक्सेस गोटे मेजर मूवमेंट से अफोर्ड करि परिबनी मॉडरेट कार्ड खेला के से कोनटा बाहरला कहला कि हमें तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन दबू expansion of council reform of the council participation of more Indians within the council ए जोडे डिमांड थिला ना बुझियो छी कोन कहूची मु और आई एम गोइंग फास्टर बुझी होची एई सर्कमस्टेंसेस रे मॉन्टेग डिक्लेरेशन आछी मॉडरेट्स मान को पैसिफाई करियार आ पैसिफिकेशन तापर देइची 1919 एक्ट जो थरे की मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट जोड़ा का खुशी ना तू सेते वाटा जाने 1917 रो कोन होची फेल टू ब्रिज मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड विदिन आईएनसी इन सब बुझिबा आईएनसी इट्स वेक प्रॉमिस ऑफ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट लैक्ड द टाइमलाइन ओके नॉट अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट ओके it prioritized provincial autonomy over central legislative reforms provincial autonomy प्रकृतर आसीबो 1935 रे किंतु स्टार्टिंग एठी हे जाईची ना हां कहि हबो ताल टिके रह जा देन वेट it ignored extremist demands for immediate dominion status तिलक ना मागुतला now ए जोडा का भितर एटा टिके बेसी आंसर लागुछ it alienated moderates by endorsing communal electorates एटा आंसर दूर दूर जाके होनी कम्युनल इलेक्टोरेट 1909 ने पळे आसी मॉडरेट्स कर सेतरे सपोर्ट सो कॉल्ड थिला दैट्स अ डिफरेंट थिंग डीटा तो होनी आंसर हमें ने खोजिया एबीसी भितर it vague promise of responsible government lacked a timeline but is that a reason or that was a fail to bridge moderate extremist divide कोन moderate गोटे कथा मागुची extremist आ गोटे कथा मागुची responsible government कथा तो दी जन जक मागुचंती दी जन जकर स्टाइल अलग हेई थई पारे गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग
दी जन मागुछन तले एटा तो होउनी दिस इज वन ऑफ द थॉट प्रोसेस बट पार्शियली तो भाईटा ठीक अछि किंतु पूरा ठीक होउनी तल देखिया कोटा पूरा ठीक होछि इट प्रायोरिटाइज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एटा कहली 1935 राव तमके एटा वन ऑफ द वे ऑफ थिंकिंग बीटा काट देलु बी और डी तो कटला ए और सी भीतर कोटा बेसी होछि ताको देखिया it ignored extremist demands for immediate dominance status हां एमान तो मागुतले भाई immediate dominance status हमकु दियो बुझला ए और सी भितरु मोस्टली होछि सी तेनु करी सीटा हो एटा हबनी कारण रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट कथा दी जन तक मागुतले सो नो बिग डील सो सी विल बी द आंसर एटा को भी बहुत पिला तमे भूल कर भूल एना होछि अग्रीड है ना I hopefully you are getting how to think on this, right? बुझियो को कहूची मु Yes, sir. there are other ways to explain also मु आगे तुम कहली या माने कोन तापर मु कहूची डी टा काई हबनी तापर मु कहूची बी टा काई हबनी ए और सी भीतर खाली सी टा ही काई की हबो कोन एटा को दि जन जाक मागुथिले ए और सी भीतर बेसी सैटिस्फाई करची सी तेनु करी सी हबो this is the way to clear UPSC prelims no big deal आंसर रे आउट स्टाइल तमर दिए छी रासबिहारी बोस अछंदी माने इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म मूवमेंट बाबा चलछि यांको हेल्प संसार समस्त नै छन इंक्लूडिंग दैट ऑफ सुभाष चंद्र बोस समस्त यांको बिना साउथ ईस्ट एशियन नेशंस साउथ ईस्ट कोन जर्मनी सब बड यांको बिना किसी काम हेई परिबे रासबिहारी बोस नाटक मन रखो रासबिहारी घोष नो जण अछन रासबिहारी घोष ये रासबिहारी बोस ऑर्केस्ट्रेटेड 1915 सिंगापुर म्यूटिनी आखि बंद करी हां यस सूर्य सेन लेड द 1934 पहाड़तली रेड तू धरा भी जानिनु पहाड़तली रेड कोन 1934 हे गला ना चितागंग रे सी बसंती तेबे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टाइम रो तो लोग 1930 that to 1934 लिख दीची आ पहाड़तली इवन इफ यू डू नॉट नो तो एटा काट एटा तो होनी राम प्रसाद बिस्मिल ऑथर द एचएसआरए मैनिफेस्टो राम प्रसाद बिस्मिल एचआरए वाला एचआरए डिसॉल्व हला पर ता नारे एचएसआरए आसो कोन पई सोशलिस्ट आसला सेटा भी मु तुमको टेस्ट डिस्कशन में कोठे कहि छी बुझला ऑथर एचएसआरए मैनिफेस्टो ना ना एटा ताको पर आसी से तळो को आउ नाहंती राम प्रसाद बिस्मिल हबनी ओनली वन विल बी द आंसर ओनली वन अछि एटा ए वन विल बी द आंसर भगवती वरन चोरा द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जे लेक्चर सी करथिबे ऑथर ऑफ एचएसआरए मैनिफेस्टो एटा लिखाइ जो कोठे देखिबा हे लिखाइ फिलोसफी ऑफ बॉम्ब मैनिफेस्टो बनैथिले भगवती चरण बोरा और ए क्वेश्चन ता बहुत पचरे फिलोसफी ऑफ बॉम्ब ता के लिखथिले भगवती चरण बोरा getting what I'm saying even if you do not know pahartali raid does not matter 1934 देखी कि सुरेशन को काट दे परी राम प्रसाद बिस्मिल एचएस राम प्रसाद बिस्मिल का पर एससी एचएसआर why did okay CDM civil disobedience movement salt satyagraha salt I don't know resonate more in coastal region than interior what is the cause question coastal region salt basically resonate haban tale adla ko uthiyao coastal salt production directly challenged the British monopolies okay interior regions lacked regional reach of Congress thank you कोची इंटीरियर रीजन लैग्ड किछि लैग फैक नथिला सेठी के बोलचनी हमर द ग्रेट पटेल मु तुम कोन कहितली जदी मन थियो क्लास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रे ए जिंसटा को से करि सालानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रे जेतले सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करले गांधी पचाला सर जोटी सॉल्ट नाही सेठी कोन गांधी केम आउट विथ द प्लान कोन ना लोकल ग्रीवेंसेस एटा मन रखिथवा लोकल ग्रीवेंसेस नेशनल प्लेटफॉर्म जोठी फॉरेस्ट राइट्स उल्लंघन होची
सेठी भी बैनर लागिवो सीडीएम रो जोठी सॉल्ट रहउची सेठी भी सीडीएम रो जोठी जमींदार माने अरे एक्सपर्ट करछंती सेठी भी सीडीएम रो तम कॉलोनी को पानी आसुनी तमे प्रोटेस्ट करछ सेठी भी सीडीएम रो local grievances national platform so that everywhere there is suffering से सफरिंग को एड्रेस करिया पई गोटे नेशनल मूवमेंट स्टैंड करि परिबो समस्त अलग अलग नीड्स अछि किंतु समस्त सिविल डिसोबे करूचंती 10 सिविल डिसोबेडेंस मूवमेंट ओटा हबो ता पई कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बनिया पई कि पटेल को पठैछि गांधी ये तो पटेल गांधी पठैछि जतले बी कहूछि इंटीरियर रीजन लैक organizational reach of Congress? No, it was very strong. So B will not be the answer. Salt tax burdens were negligible in landlocked provinces. It was uniform everywhere. So B tabi C tabi havani. Coastal elites leverage the movement for maritime trade gains. Absolutely no. A will be the answer. If I'm going fast, stop me and ask about the Cripps mission failure of in 1942. I'm saying you fact. बही तुम जहाँ लिखी आम से अनुसार करिया किंतु क्रिप्स मिशन आसीथिला फेल हवा पई से केबे आसीनी सक्सेस पई केबे आसनतला से आस्थिला आई होप तुम कहिथबी इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस भितरे मेंटेन रखिवा को सो दैट men and money can be used in that of the Europe to win the world war ता भितरे किछि ड्रामा है which of these following are overstated overstated in traditional narratives overstated माने बेसी okay Congress rejected it due to post war dominance framework मु तुम कोन कहितली ना हां रिजेक्ट करछि ना हां आउ ए तो पोस्ट वार डोमिनेंट स्टेटस कथा से नेहरू एई थरे ही रिजेक्ट कर दो ना हां ना स्टेटमेंट एटा तो ठीक अछि मुस्लिम लीग अपोजिट मु तुम कोन कहितली क्लास में मन पका मुस्लिम लीग कहबो कि बाबा ब्रिटिश थाउ थाउ जोड़े नेशन स्टेट से करी जो जोड़े डोमिनेंस से करी जो ता तळकु से किछि कंप्रोमाइज करबोनी despite of the fact various favors will be given to the Muslims but Jinnah was aware of the fact whooping majority of the Muslims masses are with Congress से खाली मुस्लिम कहि देले भी मुस्लिम लीग ता जीति जो तार किसी गारंटी नहीं से कुछ मुस्लिम लीग रो ही मुस्लिम माने वोट करियो ना काहे ना हो तो नॉन मुस्लिम माने वोट करिवेनी मुस्लिम लीग रो मुस्लिम ही वोट करिवे जो माने कांग्रेस रे मुस्लिम अछन से माने ट्रू मुस्लिम नुह ना ता माने कोन ता माने किछि नहीं ता माने जिन्ना कहउची बोली से is this history na yes this is history why लिखा है ना ना now we are getting why Jinnah was so obsessed कि ब्रिटिश ही भांगी देगी जाऊ और से जानी ची से नेता नुह because of this factor Muslim League opposed it na yes for not guaranteeing Pakistan's explicitly तो कुछ explicitly दे अब ए जिनसर फायदा मरछि ब्रिटिश जला स्टेटमेंट टूटा भी ठीक अछि गांधी's quit India call preempted negotiation with Cripps अरे क्विट इंडिया तो ता पर है व्हाट तेणु करी 3 will be the only answer 3 का 3 एटा ता पर है ना तो preempted केम थला एटा ता पर है तेणु करी एटा भूल हला 3 will be the only answer 1940 रू 1947 नॉर्मली पिला बुझी पारंती ताकू ऊपर ऊपर बुझ देई जानती यदि न बुझी पारियो देन टेल मी वी विल हैव अ क्लास ऑन दैट आल्सो synthesize the following about quit India movement underground phase क्विट इंडिया रे टॉप लीडरशिप मानन को 8 अगस्त रे माने उठै दैथे क्लीन स्वीप कर दैथे 9 रे बोध 9th रे तो कोन कहते ना क्लीन स्वीप कर दैथे तो आ एक कथा गांधी जानी छी कि हमको समान उठेइबे तो हमको उठेइबे गांधी गोटे कहि छी डू और डाई कर कि मर से छाड़ी दी मार्केट टाको ना कहीं ना जापानीज इन्वेजन को भी टैकल करने से छाड़ी दी मार्केट जहाँ करा कथा कर वायलेंस हो दिस वाज द टाइम
why Churchill was so angry against Gandhi? ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟେନ ସେପଟେ ହାରୁଛି ସେତିବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଏ ଚଲେଇଛି କଣ ନା କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ବହୁତ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାର ହେଇଛି ଗାନ୍ଧୀ କି ଫୋନ କରିଛି ଚର୍ଚିଲ ଚର୍ଚିଲ କହୁଛି ଗାନ୍ଧୀ को गांधी सी violence happening everywhere message पठेছি गांधी को violence happening everywhere why do not you fast now इन्हें फास्टिंग कहीं करनु तू this was the time ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚିଲ କଥା अमेरिकन प्रेसिडेंट भी शुणुनी जर्मनी फ्रांस को हरई साराणी now Britain is going to get crushed out सेतेबेले से गांधी को हेल्प मागी ना कौन ना क्विट इंडिया को भाई तू बंद करा गांधी कहला अच्छा फास्टिंग गांधी तापर गोटे फास्ट कला against the British violence how बेसी बढ़ी गला and the Churchill was highly frustrated with Gandhi extremely frustrated second world war पर जेतले ब्रिटेन जीति जीवो किंतु बर्बाद हेई जाइछि नेक्स्ट इलेक्शन में चर्चिल हारी जाउछि से तार गोटे लोक थिवो इंडिया में ता ना थिवो वावेल ए वावेल को लगे कि पूरा ग्राउंड बने दबो इंडिया रा पार्टीशन रो सेतरे यूएस रो रोल रहिबो तापर गोटे लोक आसे माउंटबेटन will do all the stories खाली एतिक तमे ऊपर ऊपर जानि था इंडिया रा पार्टीशन रो मेजर हैंड होछि कार ना चर्चिल अंडरग्राउंड मूवमेंट है अंडरग्राउंड फेज ओके यूथ का तो पड़े अच्छी जयप्रकाश नारायण जेपी now here one hero will come our own Biju Patnaik Biju Patnaik was also the friend of Nehru do not have the concept of age he was a ever youth guy बुझला socialist leaders like Jayaprakash Narayan okay the which of the following claims are not substantiated ହେଲା Jayaprakash Narayan drove sabotage of operations na yes statement ठीक अछि it sustained movement in Bihar it bridged rural urban divides through guerrilla peasant units यार किसी एविडेंस हम पारे नहीं सो 3 टा हबनी 3 देखले कोडी 3 will माने 3 टा हबनी तणु करी not substantiated 3 will be the answer clear leave synthesize the following about the Rowlatt Satyagraha Rowlatt Act को पढ़ा कौन थे पछ पढ़ा Rowlatt Act habeas corpus this that and all ता विरुद्ध रे गांधी गोटे मूवमेंट आनथिला Rowlatt Satyagraha ता भितरे कोन हे गला जलियांवाला बाग हे गला गांधी तापर ताको कॉल बैक कर okay are overstated do not get confused with such statements these are very easy question overstated in the traditional nationalist historiography याकू पढ़ी की घाबरे जीवनी किछि नै स्टेटमेंट ठीक अछि भूल अछि देखा ओवरस्टेट कर ओवरस्टेट हिची कि देखिया इट कैटलाइज द जलियांवाला बाग मैसेकर हां भाई रॉलेट सत्याग्रह कैटलाइज करिछि ठीक अछि रेडिकलाइजिंग पंजाब प्रेजेंटरी ना हां ठीक अछि ओवरस्टेट होछि ना स्टेट होछि ना हां ओवरस्टेट करछि ना बुझिउस तो ओवरस्टेट करूनी बेसी कहूनी एटा ठीक स्टेटमेंट बेसी कहूनी से इट ब्रेस्ड कांग्रेस एंड खिलाफत agendas okay but only until चौरी चौरा इंसिडेंट हाँ चौरी चौरा पर तो मूवमेंट ही ये है गला फिजिकल अरे है गला ओवरस्टेट कौन गला ओके इट डिमिनिश्ड मॉडरेट इन्फ्लुएंस को कमीला ओके paving way for extremist ascendancy in 1919 ना एटा लानी ए बेलु को किए पळे आसी ना प्रथम कथा गांधी पळे आसी ascendancy of extremist in 1919 immediately हबनी जदी भी गोटे मॉडरेट टू एक्सट्रीमिस्ट को तू जीबू इमीडिएटली छी ना जदी भी हबो ताले ग्रेजुअल हबो ताले 3 टा तो हबनी सो 3 ओनली विल बी द आंसर 98 रे कहार डाउट रहिला एटा गोटे वे भाबियार 98 रे कहार डाउट रहिला कहार यस और नो
sir. It's nahi, this things have been done before multiple times, so no need to waste time now. ना हेई जागुर सब କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ क्वेश्चन ତମେ ଭୁଲ କରିଛ କାରଣ ତ ଯୋଉ ସବୁ ଲେଖା ହେଇନି contested by cultural historians contested ମାନେ କଣ ତମେ ବୁଝି ପାରିଲନି ତୁ ସେଇ सेंस ରେ ଭାବିବୁ contest କରୁଛୁ କି contest ମାନେ contest କରୁଛୁ କି cultural historians अबे normal historians आगे तू आगे देखलु स्टेटमेंट ठीक अछि ना भूल अछि इट रिवाइटलाइज्ड कौन पता चाहिए ना थियोसॉफिकल सोसाइटी Blavatsky, Alcott, all those things, huh? मन पड़ला तो थियोसॉफिकल थियोस मींस गॉड यूएस ରୁ ଆସିବେ इंडियन कल्चर को देखिबे दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदांत ताको जे पढ़छि से जाइछि एबे बाबा तमे जे एइता द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया इज वेदांत और उपनिषद याकू ही पढ़े कि आसल ना शंकराचार्य and hence gave Advaitic Vedantic philosophy. जी पढ़ी वेदांत और उपनिषद से जाइए याकू ही पढ़ी समन आसले let it be Dayanand or Vivekanand or anyone. It revitalized okay Hindu Buddhist tradition theosophical ना Indian culture को पढ़ी आसी theory of कर्म रे मानुची आ white माने कहउचंदी आमे Indian slaves or in black Indians we आमनु सेंस ऑफ प्राइड आसुची कारण व्हाइट माने कहउचंदी बोली it revitalized Hindu Buddhist tradition indirectly fueling nationalist sentiment ना ठीक है तो सर okay its western leadership alienated orthodox Indian reformers like Arya Samaj कहीं गिवा western leadership alienated orthodox Indian reformers like Arya Samaj no they were not alienated from it rather they supported it एटा हबनी एमाने मूर्ति पूजा कथा कहउचंती एमाने मूर्ति पूजा कथा मना करचंती कथाटा मु मानिले किंतु ता जोगु से वेस्टर्न थॉट प्रोसेस रु आर्य समाज वाला एलिनेट हे नाहंती सेबा डीएवी स्कूल खोलिबे दयानंद एंग्लो वैदिक हाउ दे विल गेट एलिनेटेड विथ वेस्टर्न थॉट प्रोसेस हबनी बुझला इट्स वेस्टर्न लीडरशिप alienated orthodox Indian reformers na howni it shaped Anibesan's home rule league more than Gandhi's satyagraha does not make sense much sense 2-3 will be the answer easy questions huh will answer is 2-3 बुझिउची I am going fast now बुझिउची एरा सब हेई छै अगुर क्लास रे assess the following about the partisan's impact on NWFP 1947 post independence ladder NWFP 1947 एठा लीडर ना कोन NWFP रा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान लीडर ना कोन खान अब्दुल गफ्फार खान our own man unfortunate पूरा इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री पढ़ी की गोटे कथा मु जानली जदी कहा संगे आमे ट्रूली गद्दारी करछु धोखेबाजी करछु देन इट वाज खान अब्दुल गफ्फार खान हम करियर नथिला से भूलटा ए एनडब्ल्यूएफपी रे आजी बसले टेररिस्ट ग्लोबल तालिबान ये सब जो न द ग्लोबल टेररिज्म हाव हे की बस एटा आ एथि हमें जीति थलु इलेक्शन रे and it was एटा कहार गड थिला ना कांग्रेस रो गड थिला कोन पे कि हमें छाड़ देलु गॉड नोस छाड़ीचु भूल तो हेची ओके not supported declassified British correspondence एते बुझिया नहीं तो देख not supported की the referendums narrow pro Pakistan vote must significant Pashtun resistance bekare adhara Congress I do not know why do not ask me why Congress referendum रे participate कला referendum होची जे मेजॉरिटी रे बसची बाहर जागाटा
all are pro-Indians. Everyone stood for Bharat Mata. Nation as motherland concept रे कौन ना ना सेवन बने भाव है आज का टाइम में पठान्स पश्तून्स whom you cannot think of सेमाने participate ही कलेनी काई कलेनी God knows. British strategic withdrawal from the Durand line prioritized Afghan neutrality over Indian security. Okay, it Bhavani chade. Answer Bhavani. The Congress acquiescences to NWFP's inclusion in Pakistan undermined its secular credentials. Congress acquiescences to NWFP's inclusion in Pakistan undermined its secular credentials. Kind. So 1 and 3 will be the answer. 100 post independence class रे कला पर ही तमे ठीक रे बुझ परियो. Now there are stories behind it, and there is a role of Abul Kalam, Maulana Kalam. Even Kalam was not interested in it. Kahe ki interested nahi, we do not have any such historical facts, but there are various माने कोन ना माने भाभी परिया ना एई थी जो कलाम बोध हुए इंटरेस्ट नथिले. Kalam was not interested in any of the Muslim majority provinces in undivided India. ସେ ଚାହୁ ହିଁ ନଥିଲେ କି ଇଣ୍ଡିଆ କଲାମ ସିଏ ନିଜେ ଚାହୁ ନଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁସଲିମ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ନା କାହିଁକି ବିକଜ ଅଫ ଭେରିୟସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଦୋ ହି ୱିଲ୍ ସେଫଗାର୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁସଲିମ୍ସ नो डाउट इन इट along with that of the Patel and others सेफगार्ड करिवे 100 ता तमे ने बुझ परिबेनी जदी पोस्ट इंडिपेंडेंस क्लास हेछि ताहले बुझी परिबे. Any doubt till now, please ask. Doubt what ଅଛି ଆଉ सर कलम काहे चाहनले मुस्लिम माने इंडिया रे रहंतु बोली. अरे अरे 1940 टू एटा मु क्लास रे भी आगु बुझी 1940 आमे जो स्टेटमेंट टू ने देलु तार किछि हमरे हिस्टोरिकल बेस नाही किंतु आमे एथि कहि परिया वी कैन नॉट से कि कलाम माने कलाम चाहु नथिले सेति नो 1940 टू 45 जाय के कलाम वाज द पार्टी प्रेसिडेंट को करछनी गांधी गांधी एथि करछनी कारण मुस्लिम लीग पाकिस्तान ओनली फॉर मुस्लिम्स गोटे स्पेशल नीड क्रिएट करूची आ मुस्लिम लीग प्रोपागेट करूची कांग्रेस टा गोटे हिंदू पार्टी जेमिति आजिका डेट रे बीजेपी जे हिंदू पार्टी सेतबेले कहउथले कांग्रेस इज अ हिंदू पार्टी ताकू न्यूट्रलाइज करबा पई कि कांग्रेस प्रेसिडेंट हेचंदी कलाम जेमिति आजिका डेट रे बीजेपी निजर इमेज को न्यूट्रलाइज करबा पई कि मुस्लिम फिगर मान को सामना को आणुची थरे सी ताकू नै आसी आजी डेट कथा मु कहूची से मुस्लिम मान को सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी माने संघी मुस्लिम बोली कहि दोचंती आ ताकू डिग्रेड करूचंती. यस और नो? यस बुझुची को कहूची मु सोभा सर बुझिलानी. because you are not following the Indian politics. UPSC candidates do everything. आज का डेट रे जेमिति कांग्रेस को प्री इंडिपेंडेंस कुआउतला हिंदू पार्टी जेमिति आज का डेट रे बीजेपी को कुआउची हिंदू पार्टी एति बुझेला. यस सर. बीजेपी निज को सेक्युलर देखिया पई कि सबले देखिउ मुस्लिम फेस मान को सब नै कि आगु आसीओ जेतोले मुस्लिम फेस मान को आगु नै कि आसीओ जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी थिबे से स्पेसिफिक मुस्लिम मान को कहबे संघी माने आरएसएस इन्फ्लुएंस्ड मुस्लिम्स तेणु करी ए मुस्लिम माने बैकफुट रे रही जिवे केबे भी फ्रंट को आस परिबेनी एटा आजि का डेट रे एई ने चलची नाउ से बा कोए हिस्ट्री रिपीट्स सेते बड़ टाइम रे कांग्रेस को कहउथले हिंदू पार्टी but Congress was truly representing all Indians. To counter that Muslim League propaganda, Gandhi will suggest a very great man named as Abdul Kalam, Maulana Kalam, Abul Kalam, to become the party president. और इतने riots होची बारे
सो कॉल्ड हिंदू पार्टी लीडरशिप नहीं जन मुस्लिम दैट टू ए मौलाना to show the secular credentials to rest of the Muslims or all of the Indians. ये सब जिनसे देखला जिन्ना कलाम was an extremely big leader, बहुत बड़ा नेता सी. Jinnah was a joker, but Jinnah was supported by British. Hence, he was the Muslim representative, not Kalam. एति बुझेला? Yes, sir. To degrade Kalam, Jinnah will now directly counter Kalam. इन्हें कलाम से डायरेक्टली काउंटर करियो कहबो द पोस्टर बॉय ऑफ हिंदू कांग्रेस द बूट लिकर ऑफ द हिंदूज एंड अदर थिंग्स व्हिच आई कैन नॉट से इन क्लास एही जोड़ा से सॉफ्ट कथा कहछि आ सब बहुत खराब कथा कहबो आ त से अटैक करियो ताकर कार्टून बनेबो आ ताकर डिग्निटी को से बहुत तळुआ कर दो बहुत खसै दो अब्यूज करियो मां भणी ना त गाड़ी करा हो कलाम वाज अ वेरी बिग अदब आदमी जहाँ को समस्त मान सम्मान दियंतु समस्त से बहुत पोलाइटली कथबार्ता करते ही वाज अ वेरी वेल मैनर्ड गुड मैन ताको एते डिग्रेड करा हबो इट विल पेन हिज सोल थरे जाइथिबे इंडिपेंडेंस जे राइट्स जे टाइम सब होउची अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाइथिबे सेठार लीडर थिबो सेठी तोथिबो लियाकत अली खान से कलाम को ऊपर ह्यूमन एक्सकिटा थिंगो माने भावे एडोड लोक को को टाइप रे से माने ह्यूमिलेट करथिबे आ ही वाज अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे से चिड़ी जिबे तापरे मुस्लिम पॉलिटिक्स रु ना मुस्लिम सेफगार्ड थॉट प्रोसेस मुस्लिम कर कोनोसी जिंसर को से अवॉइड करिवे से तापरे बीइंग हिमसेल्फ अ मुस्लिम और अ मौलाना इट वाज वेरी नेचुरल से अवॉइड करिवे से पॉलिटिक्स से तापरे पसिबे आ एक कथा जिन्ना चाहुथिला जले कलाम पाखी जीवे वाला कथा चलला देयर इज नो बिग मुस्लिम फेस विद इन कांग्रेस लेफ्ट hence muslim league will become the only muslim face in india jala Yes, sir. the rest of the things will be done in the post independence class we have taken in a very detailed way more or less हमें तमरा पूरा हिस्ट्री सिलेबस तो या भीतर थरे तो पढ़ी दी ancient and modern तो मोस्टली मोस्टली पढ़ी दी But it सुबाव नहीं sir, what a doubt sila. अच्छा जो अमेंडिंग एक्ट 1780 कंपनी के जो किसी सुबाव नहीं सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन रो एग्जेंट कराया गया voice is not clear because Wi-Fi एने चालू नहीं मोबाइल नेट चालुची एते स्ट्रांग नहीं I cannot listen properly ask me later हाँ तू कौन कहलु मते किछि सुबालन so history वाला part is done right you can ask me later also no big deal in it so we'll go to the test 4 will and I hopefully at least एतिकी करला पर तमे हिस्ट्री वाला पार्ट तो ठीक करी आसियो केमिति क्वेश्चन पढंती कोन करंती केमिति एनालिसिस करंती कोठी गोल बुलेबू केमिति कोन करिवू दैट पार्ट इज बीइंग सेट टू यू इन दिस बिग लॉन्ग क्लासेस we'll meet you in the next test discussion now your voice is not very much audible to me see you in the next class